And what I was referring to just now is the first statement that's coming in from the Union Transport Minister on the widespread nationwide protest that we're seeing by truckers and taxi drivers. The Transport Minister has defended the new law on hit and run and has also made it very, very clear that you cannot harass common people in this manner by these kind of protests. He's also defended it, saying that this new law will ensure that lives are saved. नहीं, यात्रियों को तो परेशानी, वो तो गलत बात है ना। यात्रियों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जिससे कि वो सजग रहे। तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी तो लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना होगा। सब उनके ड्राइवरों का कहना है कि बिगड़े से बचने के लिए वो भागते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है जो या किसी एक्सीडेंट की बात नहीं है, हिट और रन की बात। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आप लोग समझाइए। सिर्फ So that is Union Transport Minister V.K. Singh saying that this isn't a question of a jail term being increased for accidents. It's a question of the jail term being increased for hit and run. And what's wrong with that is the question the government is posing, saying that this new law will ensure more accountability. It will ensure drivers are more careful when they're out on the roads and will not indulge in a hit and run, which is that they ram into a vehicle and then run from the spot, because that will attract a harsher punishment. And let's get you the details of the protests that we've been witnessing across the country. Like I said, this is a nationwide protest. So you've got taxi drivers, truckers expressing their dissatisfaction with the stringent hit-and-run provision on the new penal code. In fact, with the nationwide transportation strike entering its second day from Punjab to Uttar Pradesh to Maharashtra, vehicles lined up outside petrol pumps as fuel supply was impacted in cities across the country amid fuel shortage speculation as well. The Criminal Code law, which repealed the British-era IPC, provides up to 10 years of punishment for anyone who flees an accident site, and for not reporting the incident, a fine of up to 7 lakh can also be imposed. And it's over this that taxi drivers and truckers are up in arms. The 3-day strike called by the truckers across the country has led to empty petrol pumps at the moment in Mumbai, where we can see that almost petrol pumps near Mahim. I'm right now located in Mahim. There are at least 5 petrol pumps here, and most of them have gone dry. The petrol pumps are, people are coming to inquire about it. Bhai sahab, ye petrol pump aapka kitne baje se khali ho gaya? Petrol मिल रहा है? नहीं मिल रहा, डीजल है, डीजल मिल रहा है. As you can see, people have been coming here to find out if there's petrol, but since the petrol is not really available here, it's quite a trouble for Mumbaikars, especially if they are not able to find petrol, and this entire city, which is always on the run, could probably come to a halt. But certainly at this juncture, the transporters are holding a meeting in Delhi. They are in conversations, there are dialogues happening with the government as well to find out what really can happen, because the transporters are protesting the strike, which is basically this particular strike is because of the reason that they are protesting the new law that is going to be implemented, which is in particular states that anyone involved in hit and run cases could get a punishment of over 10 years. So certainly a lot of assurances have to be given by the government. The dialogues are continuing. It will really be only later in the day we'll get to know what exactly happens with this dialogue and meeting that is happening in Delhi. With cameraman Raju Revankar in Mumbai, Vidya for India Today. रात को 12 बजे 3 बजे ड्राई हो गया, 4 बजे खत्म हो गया, ड्राई हो गया था. अभी आसपास है पेट्रोल, आपने कुछ पता किया है? आसपास में बाइक वाले बोल रहे हैं कि नहीं है किधर ही पेट्रोल. हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं, उसका असर आम जनजीवन पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है. चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहां पर पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है, डीजल खत्म हो चुका है. आलम यह है
कि लोग वाहनों को लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं और जो इक्का दुक्का पेट्रोल पंप बचे भी हुए हैं वहां पर बाकायदा पुलिस को तैनात किया गया है वाहनों की लाइन लगाने के लिए। और ये पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पेट्रोल डीजल नहीं है, लोग अपने वाहनों को मोड़ मोड़ कर यहाँ से वापस ले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ तस्वीरें ये है कि पुलिस को जगह जगह खड़ा करना पड़ रहा है। पीछे से सप्लाई न आने की वजह से ज्यादातर चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। आलम यह है कि लोग परेशान हो रहे हैं और जहां पर पेट्रोल डीजल बचा भी हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि वो भी अगले 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये 10 साल की सजा, 7,000 जुर्माना, ये ड्राइवर लोग कहाँ से भरेंगे? हमारी 7,000 पगार मिलती है, 8,000 पगार मिलती है, उसमें हमारा परिवार भी वहाँ चलता है। हम इतना पैसा दे रहे 10 लाख का आप अपने खुद का गाड़ी डालने को धंधा कर सकते हैं। ये चाहिए सरकार को ये कानून अपना वापस लेना चाहिए, तो फिर हड़ताल खुलेगी। जब तक नहीं कानून वापस लेगा चक्का ऐसे जाम रहेगा। हिट एंड रन कानून को लेकर के देश भर में ट्रक चालकों ने जो हड़ताल की है, चक्का जाम किया है, उसका असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर सोमवार शाम से लंबी लंबी कतार जो है गाड़ियों की वो दिख रही है। मंगलवार सुबह भी तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि पेट्रोल और डीजल लेकर के जो टैंकर्स पहुंचते थे पेट्रोल पंप पर, वो फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से जो स्टॉक है वो कम पड़ सकता है और इसी डर से जो वाहन चालक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर। ये तस्वीर बताती है कि कहीं कोई आपात स्थिति बन गई हो, ऐसी एक तस्वीर जो है वो इस समय पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। Okay, so we've just played out for you a series of reports from different cities across the country, all of them feeling the pinch of this particular protest. And that's why you're seeing this kind of images. If you haven't fueled up in the last 48 hours and you need to ensure that you find out beforehand which fuel stations or which fuel pumps are currently operational, because it is going to take you quite some time to go ahead and fill fuel. Very few that are functioning, and the ones that are, you're seeing these kind of long queues as people are lining up, worried also that this protest isn't going to end in the near future.